NEET aspirants 2026, जाग जाइए, come on, wake up because now the admit cards have been officially released on the NEET sites by NTA. NTA ने admit card for the NEET 2026 examination release कर दिया है and we will be telling you how to fill this admit card for your examination date to be held on 3rd of May 2026. If we go on the first page of the admit card, we have all the personal details regarding the candidate mentioned over there, like the roll number, application number, candidate's name, gender, category, person with disability, yes or no, state of eligibility, date of birth, etc. So all the basic personal details which you had given during the time of registration are mentioned on the first page. Are the test details mentioned, where the medium of question paper, date of examination, reporting or entry time, एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन मेंशन्ड। आपको फिर से याद दिला देता हूं कि आपका एंट्री टाइम सेंटर पे स्टार्ट हो जाता है 11 AM पे एंड द गेट क्लोजेस एट 1:30 PM। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप 1:30 बजे से पहले या 1:30 PM से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं और एंट्री ले लें। Please keep this thing. Please be very alert regarding the timings of the examination. Next, on the second page, we have a self-declaration form, जहाँ पे एक कॉलम आपके फोटोग्राफ के लिए है, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। ये काम आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले कर लेना है। नेक्स्ट, देन वी हैव अ लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ये आपको सेंटर पे जाने से पहले कर देना है, एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। एंड नेक्स्ट यू हैव अ कॉलम फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर, जो कि आपको इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना है एट द सेंटर। तो फोटोग्राफ आपको बिफोर द एग्जामिनेशन पेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको बिफोर द एग्जामिनेशन अफिक्स करना है, एंड जो आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होगा वो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन करना है। I hope you are clear in this. Next, coming over the third page, we have the postcard size photograph option, जहाँ पे आपको अपना postcard size photograph affix करना है, and this dimension of this postcard size photograph will be 4 inches into 6 inches. ये भी आपको before the examination करके ही जाना है at the examination center. And at the last page, we have the important instructions related to the examination, जहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, लाइक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, या गवर्नमेंट आईडी लाइक एन आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा आर मेंशन्ड। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, प्लीज मेक श्योर यू आर कैरिंग अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट and also carry any scribe related documents if you are bringing a scribe along with you. फिर इसके अलावा क्या क्या नहीं ले जाना है वो ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में सजेस्ट कर दिया गया है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, स्टेशनरी आइटम्स एक्सेट्रा। प्लीज कुछ भी और मत कैरी करिएगा एक्सेप्ट योर एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड द गवर्नमेंट आईडी, दैट इज द आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा। आई होप यू आर वेरी क्लियर कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे फिल करना है, कब फिल करना है। सेंटर्स पे टाइम पे रिपोर्ट करिएगा, 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद गेट्स क्लोज हो जाएंगे, कोई एंट्री नहीं मिलेगी। एंड एनटीए इज वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस रूल, सो प्लीज फॉलो दिस गाइडलाइन। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. Thank you for watching this video and do not forget to subscribe to Medical 360.